Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ikram. You're watching English with Ikram. In today's video, I'm going to talk about how can we speak English with accuracy and with fluency just with the help of simple present tense. Simple present tense हमें accuracy और fluency के साथ English बोलने में कैसे help कर सकता है और मैं बिल्कुल easy language में स्पेशली इन उर्दू में कि बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेंट किए कमेंट्स किए हैं कि आप जब स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवा रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन किया करें. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर वाचिंग माय वीडियो एंड यू वांट टू लर्न. तो ट्रेडिशनली जैसे हम टेंसेस पढ़ाए जाते हैं तो हम सिर्फ टेंसेस को रूट लर्निंग जैसे हम क्रैमिंग कहते हैं जैसे याद करते हैं. बस वही सिंपल सेंटेंसेस, वो खाना खाता है, वो खाना नहीं खाता, क्या वो खाना खाता है. जस्ट आफ्टर लर्निंग द टेंसेस we are not able to speak English. Our students are not able to write a single sentence correctly. They are not able to speak a single sentence correctly and with confidence. So in last video spoken English part 1, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. उसमें अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लें. मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, उसका सेंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस, ये मैंने डिस्कस किया डिटेल के साथ. तो आज हम देखेंगे कि जस्ट आफ्टर लर्निंग सिंपल प्रेजेंट टेंस वी कैन स्पीक इंग्लिश. वी कैन स्पीक इंग्लिश विद एक्यूरेसी एंड विद फ्लुएंसी. और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है कि फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है. तो आज बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश जस्ट विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. बट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. लास्ट तक मेरे वीडियो को देखना है और आज इस वीडियो के एंड पे आप एक्यूरेसी के साथ इंग्लिश बोलने और फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलने के काबिल होंगे इंशाल्लाह. लेट्स स्टार्ट. सो अगेन आई रिपीट द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज subject plus V1 plus object. Subject, first form of the verb and object. I have discussed the sentence structure, the basic components of a sentence of simple present tense in detail. Watch that video again. You will find the link in the description. वो spoken English part 1 का आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देखेंगे. उस वीडियो को देखें और उसके बाद फिर आप इस वीडियो पे आए. सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इट मीन्स दैट सब्जेक्ट एनी नाउन एंड प्रोनाउन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट अगेन नाउन एंड प्रोनाउन. So how can we speak English just with the help of simple present tense? First of all, the very first use of simple present tense is routine life. How can we express our routine life? Whatever we do from morning to night, that is routine life. So whenever we want to express, we want to describe our routine life, we can express, we can describe with the help of this very simple structure, subject plus V1 and object. How? Let's see. I get up early in the morning. I get up early in the morning, subject, V1 and object. Just concentrate on the structure of my sentences. How do I form my sentence? Subject, first form of the verb and object. I get up early in the morning. After that, I offer my Fajr prayer. Then I recite some verses of Holy Quran. After that, I take my breakfast. In my breakfast, I take egg. Sometimes I take jam and bread. After that, I get ready for my school. I put on my uniform. I polish my shoes. I put on my shoes and then I leave for my school. I go to school by my own car, or you can say I go to school on foot. I reach school at 8:15. I attend the morning assembly. After that, I take my first period. I take my second period. After 2 periods, Sir Ikram teaches us English. Sir XYZ teaches us physics, maths, chemistry, and then after 6 periods my classes are off. Then I go back to my home. I reach home at 1:30. I
take my lunch. After that, I take rest for some time, and then I offer my Zuhr prayer. After that, I go to playground. I play with my friends. I gossip with my friends. I take exercise in the evening, and then I come back to my home. I do my homework. I sit with my brother and sister. I use internet. I use my mobile. I watch TV. I read a newspaper. I study for some time. I take my dinner at 8 o'clock. After that, I study for 2 hours, and then at 10 o'clock, I go to bed. Look at my sentences. Just simple structure. Subject plus V1 plus object. I have spoken a lot of English. Whatever I do from morning to night, which normally we call routine life, I will express just with the help of simple present tense. आप सुबह से शाम तक कुछ भी करते हैं, which is permanently, that is your routine life, उसको आप जब भी डिस्क्राइब करते हैं, जब भी आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम ट्रेडिशनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, वो यूज करते हैं. उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. It's very simple. Now you have to practice yourself. Whatever you do from morning to night, you have to express with the help of simple present tense. ये simple present tense का एक use है. Is that clear? Now let's see. The next use of simple present tense is permanent habits. How can you express your permanent habits? What is permanent habit? The thing that you do permanently. That's a part of your life. आपकी जो पक्की आदतें, आप उनको जब भी एक्सप्रेस करते हैं, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. For example, I always speak truth. And one thing more, that whenever you want to say something which is permanent, you use the adverb always, daily, every day, frequently, often. These are the adverbs that you normally use when you want to say something about permanence, the thing that you do on permanent basis. I always speak truth. I always respect my teachers. I get up early in the morning. This is my permanent habit. I usually go to play cricket in the evening. I daily read newspaper. I every day visit my friends. ये वो सारे काम हैं जो मैं अक्सर करता हूँ, रोजाना करता हूँ, आम तौर पे करता हूँ. I always brush my teeth in the morning. I always brush my shoes. These are the things that you do permanently. तो ऐसी चीजें जब हम बयान करते हैं तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, which is very simple. Subject plus V1 plus object. Okay. Now you have to practice yourself. First, routine life. You have to describe your routine life yourself. Jam technique. I discussed in my last video. Jam technique में आप अपनी routine life ये टॉपिक लें और उसको 1 मिनट दोबारा मेरी लास्ट वीडियो देखें कि व्हाट इज जैम टेक्निक. उसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं. व्हाट इज जैम टेक्निक? यू हैव टू जस्ट स्पेंड 10 मिनट्स डेली. जस्ट अपनी रूटीन लाइफ 1 मिनट के लिए बोलें, स्टॉप वॉच लें, अपना टाइम नोट करें और उसको 1 मिनट के लिए बोलें, विदाउट एनी नोट्स, विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन. जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्पीकिंग, राइट? Then you will see that just after 1 week, you will start speaking fluently. Let's see. The next use of simple present tense is likes and dislikes. आपको जिंदगी में कुछ भी पसंद है. The basic thing is permanence. Simple present tense is used for something which is permanent. Routine life, permanent. Permanent habits. Likes and dislikes. आपको जो पसंद है, जो नहीं पसंद. For example, let's see. I like to drink coffee. I don't like to drink tea. These are the things that I normally like, I do like, and I do not like. I like to eat apple, but I do not like to eat banana. I like to wear shalwar kameez. I dislike to wear pant and shirt. I like to visit northern areas. I don't like to visit Karachi, for example.
I like blue color. I do not like red color. So whatever I like and whatever I don't like, whenever I want to express my likes and dislikes, I normally use simple present tense. Is that clear? It's very simple. Okay. You have to practice this again. One thing more. The next we can talk about nature of the things. इंसानों के अलावा दुनिया में जो भी चीज अल्लाह ने पैदा की है, अल्लाह ने उसको सर्टेन नेचर के साथ पैदा की है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. दिस इज नेचर ऑफ द बर्ड्स. दे फ्लाई इन द एयर. द फिश लिव इन द वाटर. The lion lives in the jungle. The sun rises in the east. So these are certain things which have been created by Almighty Allah with certain nature. And that nature cannot be changed. That is permanent. So, whenever you talk about your routine life, which is permanent, you use simple present tense. Whenever you want to express your permanent habits that you do on permanent basis, अगर आप आर्जी तौर पे करते हैं, then how will you express? ये हम next discuss करेंगे. लेकिन here we are talking about with something which is permanent, जो आप daily basis पे always, often, usually, frequently आप करते हैं, उसको आप simple present tense के साथ express करते हैं. Then likes and dislikes, whatever you do on permanent basis, whatever you like on permanent basis, आपकी परमानेंट लाइकिंग है और आप डिसलाइक करते हैं. देन नेचर ऑफ द थिंग्स, इंसानों के अलावा जो कुछ भी दुनिया में है, दैट हैज बीन क्रिएटेड विद सर्टेन नेचर. और नेचर लाजमी मतलब परमानेंट होती है. तो आपने आज इन 4 चीजों की प्रैक्टिस करनी है. रूटीन लाइफ, परमानेंट हैबिट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड नेचर ऑफ द थिंग्स. जस्ट फॉर फ्लुएंसी, एक्यूरेसी इज देयर बिकॉज यू हैव लर्नड अ पर्टिकुलर टेंस. Simple present tense, subject plus V1 plus object. Accuracy तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. Just you have to practice for your fluency. And 4 टॉपिक्स पे आप प्रैक्टिस करें, बोलें बार बार so that it would become the part of your language. आप देखेंगे just after the practice of for 5 or 6 days you will get a good level of fluency. आपने प्रैक्टिस करना है और जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी का लेवल बढ़ जाएगा. जब फ्लुएंसी का लेवल बढ़ेगा यू विल गेट अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो उसके बाद आपके लिए बोलना कोई मसला ही नहीं है. तो दिस इज स्पोकन लैंग्वेज पार्ट 2. इन स्पोकन लैंग्वेज पार्ट 3 we will discuss that how can we speak English accurately and fluently just with the help of tenses. टेंसेस हमें कैसे हेल्प करते हैं एक्यूरेसी के साथ और फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलने में. और आज मैंने कोशिश की उर्दू इंग्लिश मिक्स करके कि जितना सिंपल हो सके, ताकि जो छोटे क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि हम बच्चों को दिखाते हैं वीडियोस, तो आप बच्चे कहते हैं कि हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आती, सर से कहें के साथ उर्दू में बात करें, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पोकन लैंग्वेज. तो इंशाल्लाह अगर आपके अंदर विल है, इफ यू आर विलिंग टू लर्न, इफ यू हैव क्यूरियोसिटी, थर्स्ट फॉर लर्निंग, तो इंशाल्लाह आप जस्ट आफ्टर 3 or 4 tenses you will start speaking English with accuracy and fluency. That's all for today. और जब तक ये बता दूं कि लास्ट 2 वीडियोस स्पोकन इंग्लिश पार्ट 1 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और जैम टेक्निक फॉर फ्लुएंसी. जैम टेक्निक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.